Good afternoon, all. We are starting lecture number 64, and we are in the unit number 5 of the data structures and algorithm. Unit number 5, it means a graph. Am I audible to you all, first of all? Let me know. Yes, sir, you are audible. Now I am going to share my screen. Is it visible to you all? Yes, sir, it is visible. So, we have started the graph, and in the last lecture we have learned, last two lectures even, we have learned about some terminology of the graphs. Okay, which includes the very basic types of the graphs, various different kinds of the edges in the graph we could have. Okay, like loops and simple edges. Then we have also seen the degree of a specific vertices in the graph. We have, I think, also learned about the connectivity, strongly connected and weakly connected components of the graphs. And we have started about some special graphs, and we have covered, I think, complete graph. Uh, yes or no? Please let me know. We have covered the complete graph or not? Yes, sir, Yes, sir. yes, sir, We you have have covered covered. complete graph too. So Kn is a complete graph with n vertices. Okay, without any loop. Please look into that. That should not have a loop. For K3, Kn I'm talking about only. Okay, when every vertex is connected to every other vertex is directly. So directly what should be there? Direct connection in between every pair of the vertices. Now I am going to start with the other types of the graphs, special graphs. That is, first we are going to learn today is cycle. So what do you mean by a cycle? Cycle. साइकिल जिसका कोई पॉइंट एंडिंग पॉइंट ना हो सर, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सर एक ही हो. So first of all, it should be ending point and the starting vertex same. Okay, and number of vertices should at least be 3 or more than 3 actually. For 2 or 1 vertices, there could not be a cycle actually. Okay, cycle, it means we are having a path from within a graph in such a way that starting and the ending vertex should be same. Okay, so such So why is graph it that, only three? because for 2, not 3 only, it is 3 or more than 3 actually. Yes, sir. Means more than 3 and 3. Okay, so why it is for, suppose 2 vertices are there, so it could not be possible to make a cycle over there. Sir, but in case of a loop, the starting No, and the ending. loop will not be a cycle. Loop is not a cycle actually. Okay. Sir, but the Loop, starting and ending vertex are same. हाँ, good. It is not only like कि हम एक ही vertex की बात कर रहे हैं यहाँ पर. एक vertex पर cycle create नहीं होगी. It should also have some edges. Okay, vertices और edges की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. A loop is a special kind of cycle, you can say, but for a cyclic graph, जो मैं पढ़ने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ आपको लेक्स में, cyclic graph के लिए it should be like more than 3 vertices. Okay, cyclic graph की हम बात करेंगे. Cycle, like you can say that particular loop could be a cycle, a special case where a single vertex is there and a single edge is also there. But if we were talking about a cyclic graph, then a cycle should be there actually. And that cycle should be more than containing more than 3 vertices. Okay, so like and such graph is also known as a cyclic graph. That is what we are actually going to know, and it will be represented by Cn. So C3, it means ki 3 number of vertices. So it could be a cycle, okay, of 3 vertices. It could be a cycle of 4 vertices. It could be a cycle of 5, and it could be a cycle of 6 vertices. Okay, now tell me, it is only in the case of when there is no direction. But when the direction will be given, then the definition will change. Okay, so now let me take the example of this one.
For that slide I need to make it duplicate, say okay, and now suppose I am having an arrow in this way. So is it a cycle? No, sir. No, सर sir. साइकिल का इसमें एक एरो जो क्रॉस कर रहा है. So it is not a cycle actually. Okay, so यहाँ तक तो ठीक है, but ये direction, because of this direction it is not a cyclic graph and it is not a cycle actually. Okay, so for cyclic in directed graph, arrow and the direction also matters a lot. Okay, in undirected graph there is no such case of the arrows, so we can simply say that these graphs are the cyclic graph. But in the case of direction, the edges contains the direction. We need to be careful and we need to check the directions of each of the arrows of each edge in order to find whether the graph is cyclic or not. Okay, so be careful. So cycle is up now this is actually very important concept. Now suppose I am removing this particular edge from the graph. So tell me, first of all, is it a graph? Concentrate on C6 only. It is initially having 6 edges, but I have removed the last edge represented by myself right now. Suppose this edge E मैंने हटा दी है ग्राफ से. So क्या ये अभी ग्राफ है? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ है सर. वेरी गुड. ओके, तो ये ग्राफ है अभी. ओके, नाउ क्या ये ट्री है हटाने के बाद? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई हैव रिमूव्ड द एज ई, इज इट अ ट्री आल्सो? यस सर, ट्री है. कैसे? सर इसका चाइल्ड कोई सा भी मान सकते हैं हम, जैसे It is a kind of skewed tree, we can say. It's a kind of skewed tree. Very good. Okay, so it is a tree actually. Everyone is agreed upon that. Is it a tree? यस सर, ट्री है. बट आप रीजन नहीं दे पा रहे हो बेटा, ट्री क्यों है ये? anyone no one is going to like is ready to give it reason. सर वो लग नहीं रहा था ना स्क्यू ट्री जैसा. Okay, look at C3. Suppose I have removed this particular edge, then it will be a tree. Will it be a Yes, tree? sir. यस Yes. सर, ट्री है क्योंकि एक Okay. रूट नोड है ना. Now suppose I have removed a specific edge E also from here. Is it a tree now? ना, ये ट्री नहीं है सर. नहीं, ट्री है. Just try to reform that particular diagram in your mind. Without that edge E, only 3 edges are there. So Yes, sir, if I am removing edge E also, then are we removing the vertex also, or there are only 4 vertices? Very good question. Very good question. है ना? Like no, I am only going to remove the edge here. अब ये चीज मैं अभी इसके संग एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ. पहले अभी राइट नाउ जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट. आई एम ओनली रिमूविंग द एजेस, नॉट एनी वर्टेक्स. सो विल इट बी अ ट्री? यस सर, ट्री है. Sir, Please give the reason also. So we can reform for it. making If we are in the- if we need we to can form reform a it tree if we out are of just- C4, we need to transform it. I already told you just reform that diagram in your mind like a tree. Will it be a tree now? It can be a straight यस सर, ट्री है. wire type something. सर हम Okay. ऐसे Suppose I am going to remove this particular edge. Then will it be a tree? Yes, sir. यस It is सर. tree, Yes. but what orientation we are choosing to make it tree, sir, that we have to see. It doesn't matter right now. Okay, will it be a tree or not? Is it following the properties of a tree or not? Is it following the child parent relationship or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना? Sir, So edge just to tell edge me connect now. है ना? Now tell me what is the difference between tree and a cycle? सर ट्री में
ट्री एंड अ ग्राफ, ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस है ये बताइए. In this PPT only the graph and the difference between the tree and the graph is hidden in this slide. Sorry. सर कुछ ऐसे ही आ रहा है, मतलब ट्री में सर जो चाइल्ड है एक दूसरे के साथ एजेस के थ्रू कनेक्ट नहीं होते, और ग्राफ में सर ये ग्राफ में चाइल्ड भी इसके जैसे एक पॉइंट ये नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सर एज के थ्रू, और ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड पाथ है. Okay, near about that. Anyone else? Near about that. Close path. Okay. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? What could be the difference between tree and a graph? Tree follow a Sir. level structure. Level structure. We can't define a level in graph, sir. Okay. Or anyone else? अभी कोई और भी बोलने वाला था? Sir, it's like about the root node or the parent node. Means there is no link between the parent node and the child. We don't know which is root node. Yes, sir. I'm not Yes, getting sir, the yeah. main. I'm not getting the right answer. Actually, what I want. In the first, those जिसने first answer दिया था उसने last में बोला closed है, उससे related कुछ हो सकता है यहाँ पर. Cyclic word यहाँ पर used है. So graph always contains a cycle. Actually, डायरेक्शन ग्राफ जो होती है वो साइकिल या क्लोज लूप होता है उसके अंदर, लेकिन ट्री में कभी भी क्लोज नहीं होगा, साइकिल नहीं बनेगी कभी भी ट्री में. आपने ऑब्जर्व किया होगा जो भी हमने ट्री पढ़े हैं, द ट्रीज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वेदर इट इज अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, AVL tree, B tree, whatever it is, we have no cycle or a closed path in that. Yes or no? Like direction तो है ही नहीं वहां पर, तो in direction नहीं हो उसी केस की हम बात कर रहे हैं अभी. So when there is no direction in my edge, okay, so the cycle, if the graph contains a cycle, but the tree will not contains a cycle, and a single edge difference is there in between a tree and a graph. If I remove a single edge from a cyclic graph, then it will become a tree, or if I add a single edge in a tree, then it will become a graph. That single edge should be such that it will create a cycle. Now you have got it. So the difference between tree and a graph is simple, that tree contains a cycle, but graph will not contain any cycle. Is it okay? Tree contains So cycle. graph will contain a cycle. Sorry, na? yes. Graph Good, will good. contain इसका मतलब कि cycle. आप सुन, इसका मतलब कि आप सुन तो रहे हैं कुछ लोग, 3-4 लोग. सर सुन रहे हैं ना, तभी तो बोला. तो ग्राफ में साइकिल होगी लेकिन ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होगी. तो one edge is उसका तो there. सर पाथ डिफाइन है टॉप टू बॉटम. Is it okay now? So what is a cycle and what is a graph? Oh, sorry, tree cyclic graph. Is it okay? Now coming on to the wheel. Next, WN, which is a like special case of a cycle also. Wheel will be represented by WN. Okay, wheel is just like a like suppose I am going to add a single vertex in this, and now all the other vertices will be connected with this vertex. And that particular graph will be CN will be converted into WN actually. Is it okay? For any kind of CN, I could do this. Look at that actually. So we obtain a wheel when we add an additional vertex to the cycle, okay, and connect this new vertex to every other vertices in CN by adding a new edge. Then it will be calling as a wheel. It will be different as a different from a complete graph. Complete graph नहीं है, ये ध्यान रखना. सर ये तो 3D ग्राफ का ये दिख रहा है, ये कंप्लीट ग्राफ है, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है. कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है बच्चे कि बीच का वर्टेक्स नहीं होता है, ये है ना. कंप्लीट ग्राफ जैसे जैसे दिखता है कुछ कुछ K3 K5 जो हमने पढ़े थे, if you have remembered that.
this one. K1, K2, K3, K4, 5 पढ़े थे. Like this you can consider as this is K4, but suppose this is a vertex, then it will be W4. You have got it what I want to say? So do not be confused. यस सर. So do not be confused with that. सर आपने मिडिल में जब एज इंसर्ट कर दिया है तो ये कुछ 3D ग्राफ जैसा लग रहा है. So it is a special graph wheel. Okay, W3, W4, W5, W6. Now, कुछ terms हैं. Cyclic graph. If a graph contains a cycle, then it is called a cyclic graph. Acyclic graph. If the graph does not contain any cycle, then it is called a acyclic graph. ये important tree, terms sir? हैं. Sorry. Sir, if a graph contains a cycle, does not contain a cycle, then can we call it a tree, sir? Yes, definitely it will be a tree. But in the case of undirected graph, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. Directed graph के केस में वो ट्री नहीं हो ये भी जरूरी नहीं है. आप समझ रहे हैं इस चीज को? Like I have taken the example of this one. है ना? Like अभी इसको एज को हटाओ मत आप. तो क्या ये साइकिल है? साइकिल नहीं है. तो ये ट्री भी नहीं है. साइकिल नहीं है तो उसका मतलब नहीं कि ट्री हो जाएगा. डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं केवल अभी, है ना. अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो वो एज इट इज ट्रू है, बट इन द केस ऑफ डायरेक्शन यू हैव टू बी केयरफुल. द गुड एग्जांपल ऑफ दिस वन इज दिस. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Like this graph, if I am having this edge in the graph, directed graph, E edge अभी है, हटाया नहीं है मैंने इसको, but still it is not containing a cycle. तो अब साइकिल नहीं है इसका मतलब कि ट्री है, ऐसा मत बोलिएगा. ठीक है? तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में थोड़ा बहुत इशू है. अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो दैट इज ट्रू एज इट इज. Now acyclic graph, if a graph does not contain a cycle, then it is called a acyclic graph, or it could be a tree in the case of undirected graph, simple graph. Now weighted or network, weighted graph or networks. Okay, if the number, if we will associate a number to every edge of a graph. अब suppose कि ये ग्राफ है, इसमें मैंने कोई नंबर एसोसिएट करे, हर के संग मैंने एक नंबर एसोसिएट कर दिए. ओके, सपोज मैंने यहाँ नंबर एसोसिएट कर दिए हैं. मैंने हर एच को कोई भी एक वेट दिया है, जैसे कि इसके सामने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया. देन दिस इज नोन एज द वेट ऑफ अ पर्टिकुलर एज, एंड अ ग्राफ, such graph which contains, in which every edge has a specific weights, then it is called weighted graph. Weighted graph or network भी कह सकते हैं इसको. Okay, is it okay? सर इसमें वर्टेक्स का भी वेट होगा? नहीं, वर्टेक्स से कोई वेट नहीं होता. ओके, नाउ अगेन लेट मी Sir, कम ऑन टू by- द हाँ, yes, ask fast. Sir, by weight, what we mean to Yes, good. here? So like suppose weight I am assigning a number to a positive number to that particular edge. Why I am saying positive? Because in most of the real life situations it should be positive actually. Like weight can be here to represent the distance between two vertices. Say A and B is there, the distance between A and B is 1. May be there, or it could be a cost of traveling from A to B. Okay, it could be a time taken a person to travel from A to B. So according to the question, it varies from question to questions. Whatever the situation given to you, it will be a representing a particular scenario. डिस्टेंस. Is it okay to you? Yes, sir. है ना? Graph If एक तरह से as per a question given to me, it will be representing the scenario. So it could And be we a call it a network. yes. In the case of network, you can say it could be a speed of data transfer. Like in our lab, there is a network. है ना? LAN we are having in our labs. So the weights on a specific LAN, we can say it could be a rate of data transfer. 1 Mbps. Sure. हम बोलते हैं ना 1 Mbps की स्पीड है, या 2 Mbps की स्पीड है, 3 Mbps की स्पीड है, and so on. हेलो Yes, sir. हाँ जी, बोलो बेटा. सर, ग्राफ एक तरह से मैप में ही काम आता है ना, तो ये ए और बी में जो वेट आपने लिखा है ये डिस्टेंस भी हो सकती है.
मैंने यही बोला बेटा अभी, वेट डिस्टेंस मैंने बोला अपने मुंह से कि इट कुड बी अ डिस्टेंस आल्सो, हाँ, इट कुड बी अ डाटा टाइम ट्रांसफर आल्सो, रेट, डाटा ट्रांसफर। ठीक है. नाउ DAG, directed acyclic graph. DAG full form is directed acyclic graph. When our directed graph contains no cycle, then it is called DAG. So that particular example which we have just considered was a DAG. Come on to that point. The square one with different directed arrows. Yes. I have just missed that. Let me create once. Okay, I think I have not saved it. That's why it has been. So, like, suppose this is the direction. This one. Okay. So this is a directed graph, but there is no cycle in that. That's why it is known as DAG, directed acyclic graph. Okay, now let me clear one more thing in that. Like अभी शायद किसी student ने पूछा था कि when I am going to remove an edge, whether the vertices associated with that will also be removed or not. Okay, so अजय शर्मा, जब हम edge remove करेंगे तब vertex remove नहीं होंगे. Okay, but जब हम vertex remove करेंगे तो क्या edges remove होंगी? The question is एजेस that. भी होगी रिमूव हो सर, जाएगी हो Of जाएंगे. course, Connection lost. Definitely. there will be no connection without vertices. सर. Good. वर्टेक्स एक So, तरह से bridge suppose का if काम I कर am रहा है going ना, to वो remove this particular C vertex, then which edge will be removed? So both the edges which are दोनों connected with रिमूव हो C. जाएंगी. Both the edges which are incidenting on that particular vertex. Now, whether the directed or undirected does not matter at all. Is it okay? So please be careful when I am going to remove an edge. The vertices will not be removed. But if I am going to remove a particular vertex, then associated edges will definitely be removed. रिमूव्ड. Okay. सर एक Now तरह से important. सर Total edge- degree of a vertex. Now come on to some important points. Total degree of the Sir? vertices. Yes. So what is the difference between acyclic and DAG? Acyclic. Okay. Acyclic could be directed also. Or sorry, undirected also. This. Is this a cycle? Consider that as a vertex. These are four vertices. A, B, C, D. Is this a graph first of all? Yes, sir. Is it containing a cycle? Yes, sir. It Yes, has sir. more than 3 vertices. So it is a cyclic graph. Okay. And now suppose आप पूछ रहे हैं difference between DAG and Acyclic. acyclic graph. acyclic. DAG is directed. Okay. But now suppose, is this a graph? Sir, it is a graph. And is it a cyclic graph? No, sir. No sir. So it is a, or is it a DAG? No, sir. It Yes. should be a directed graph, but it is not. But it is a acyclic graph. Okay, sir. Got it. Got it? सर डायरेक्टेड कहाँ है? डायरेक्शन तो है ही नहीं इसमें. मैंने कहाँ बोला डायरेक्शन है बेटा जी? I have said कि it is a acyclic graph. It is not a acyclic DAG. है. It is not a DAG. Directed acyclic नहीं है लेकिन ये. Directed acyclic is this one. This is DAG. DAG. In which the directions is there, but it is not forming a cycle. But suppose the same graph is there, and I am having a direction in such way, this, and this. Now, is this a DAG? No, No. sir. It is a cyclic graph. It is a cyclic graph. Directed cyclic graph, but it is not a directed acyclic graph. अगर एक एज को हटा दो सर तो बन जाएगा जी acyclic graph. So now total degree of vertices. Total degree of vertices will be. Can anybody tell me what could be the total degree? We have learned about the degree of the vertices. So number of edges degree connected to it. in Number degree of and edges out degree. incidenting on that. Very good. Very good. In Incidenting. degree, incidenting or in degree plus out degree could also be there in the case of Sum directed. of in degree and out degree associated. with Directed graph vertex. is sum of out degree plus in degree, and in the case of simple graph, it means undirected graph. It could be the total edges incidenting on that vertex. Total degree.
Okay, now source. A specific vertex with the in degree 0 is known as source. Suppose we have a Source. graph in that particular graph. Suppose I have a vertex, a specific vertex for which the in degree is 0. It means all the edges are outgoing only, not no incoming edge on that. So it is known as a source. Source. And then sink, the vertex with out degree is 0. It means ki In if degree any. Okay, now Brij Kishore will teach us. नहीं सर मैं नहीं We are all waiting, Brij Kishore. नहीं सर मैं कब वो मैं तो सिंक की बता रहा था सर कि कोई वर्टेक्स हाँ वही तो, that is what I am saying. आप बताओ बेटा, what is sink? आप ही पढ़ाओ. वर्टेक्स में सर कोई वर्टेक्स है उसमें आउट डिग्री तो कोई नहीं है, इन डिग्री है तो वो सिंक कहेगा ना. Okay. और बस यही अब कह रहा बताओ, था what is the diameter of a graph? सर. मुझे क्या मालूम सर. Diameter of a graph is the length of longest path. Diameter is a graph. Diameter of any graph is a length of longest path. So just like the height of tree. Length of longest path. What you are asking? So just like the height of tree as we saying diameter of graph. Height of tree was the longest path. That is very good. हमने वहां पढ़ा था ना कि हाइट लॉन्गेस्ट पाथ ही था, लेकिन हाइट भी. हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है? हाइट ऑफ द ट्री इज नथिंग बट अ लॉन्गेस्ट पाथ. लॉन्गेस्ट पाथ That will be from root to the leaf. Okay, length of the longest path will be the diameter of a graph. Now maximum edges in the graph. This some formulas I am going to discuss now. So what could be the maximum number of edges in a n vertex graph which is undirected? यदि ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती हैं उस ग्राफ में n वर्टेक्स के साथ? 3. We are trying to find out the formula actually. N+1. So maximum edges in a graph for N directed plus one. graph, we are saying this is n into n plus 1. And for undirected graph, it will be n into n minus 1 upon 2. Now look at how. Suppose I am having a graph of n vertex. Okay, 4 vertex. Sorry. So 4 vertex. So maximum edges that I can draw without direction could be this. Loop. Can we use loop? No, Nick, that is what I want to clarify. Let me clarify one more thing. That graph should be a simple graph actually. Simple means it will not be a multi-graph. It will not it should not have any loop. Okay, loop और multi-graph को हम avoid करेंगे. Avoid मतलब इसमें हम इसको include नहीं करेंगे. We will use direct single connection only with each other vertex. Definitely, हाँ. Simple graph we are talking about. Simple graph, it means कि it should not have any parallel edges. It should not have any loop. Okay, so then that graph could have maximum of n into n minus 1 upon 2 simple graph edges in a with n vertices usually. Okay, so n यहाँ पर कितना है? 4. 4 into 3 by 2. 12 a by 2 equals to 6. So यहाँ edges कितनी आ रही है? 6. नहीं, suppose यदि directed graph है तो कितनी edges हो सकती हैं बताइए अब आप? 12. कैसे? ये भी बताओ बेटा आप. Sir, n equals to 4 and a vertex 4 into. नहीं तो you need to take an example right now. आप एग्जाम्पल भी बताइए बेटा. 12 कैसे होगी? जैसे I have taken an example of a simple graph and I have shown कि 6 edges are there. Now you need to take a directed graph and you need to show that. सर हाँ अब बताऊं सर बता दूं. इनके डायरेक्शन ये रिटर्निंग डायरेक्शन भी है और सर दो इसमें 2 डायरेक्शन होंगे ना एक एज में, एक जाने वाला एक आने वाला. So every edge should have 2 edges in that case. So this one and this one. So that's why graph should have 12 edges in that case. They are not parallel edges. I have already explained to you. Yes or no? Yes sir.
Are they parallel edges? एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं और Yes, so they are. They are parallel edges? no. Ajay was, I think, there. Ajay, is it parallel edges? Yes, I think so. Because Anyone? they are just हाँ बोलो because they are in different directions, just like the field lines. सर ये पैरेलल कैसे हो गए? पैरेलल में से एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं वो। Are they parallel edges? They are not actually parallel edges, Ajay. For parallel edges, they should have the same direction also. These are parallel edges actually. Yes. It means a single vertex is the out order of single vertex for the another vertex is 2 in that case. If we are taking 2 vertices only. वापिस बोलो एक बार. Sir, अगर हम कोई भी 2 vertex ले रहे हैं, if we are taking only 2 vertices and a single vertex is the out order, we say the out order of one vertex for another vertex is 2, then it is single, means the parallel edges. Parallel edges. Yes. Out degree of this is 2 and this is 0. Yes. Okay. In same direction. Two edges are known as parallel if they have a same direction. In the case of direction, but in the case of if suppose there is no direction, then they are parallel. अभी ये दोनों parallel हैं, but in the case of direction, they are parallel only. You told, yeah. In undirected they are parallel, but in directed there has to be same direction. And if suppose they are direction and if they have the different directions, they are not parallel. Now this one is not parallel, but both of them are parallel actually. Is it okay now? Okay, sir. सर अगर So ये now- अनडायरेक्टेड so now- होगा तो उसको किस में कंसीडर करेंगे कि पैरेलल है कि अनपैरेलल? ये बनाया ना मैंने ग्राफ यहाँ पर बेटा, ये ग्राफ, ये अनडायरेक्टेड तो है. So, इसमें sir, in the पता नहीं above- चल रहा कि So sir, in the above diagram, we can have the parallel edges also for simple graph. Which one you are talking about? 1 and 2. Yeah, this first one. In the So we are not formula- considering parallel edges, na? We are taking only this formula is when the graph is very simple. Okay, direct. It will not connection. have any parallel edge. It will not have any loop and so on. It should have a simple graph. This formula is for only a simple graph. I am repeating. Okay, when we have a loop, then it will not work. When we have a parallel edges, then it will not work and so on. Okay. So in the case of direction, we can say that it will be just doubled to the undirected graph. In the case of undirected graph, if it is 6, then in the case of directed graph, it will be 12, because every edge has another pair in the opposite direction. So 6 multiplied by 2, it will be 12. For any kind of vertex, you can see if I am having n vertex, then in the case of directed इनगोइंग graph, है आउटगोइंग. if it is n into n plus 1, and simple graph, it will be n into n minus 1 upon 2. Okay. Now another special graph we are having, that is bipartite graph. This is again very important concept. So a simple graph, you just keep keep that word in your mind. Simple graph is called bipartite. Simple, it means it will not have any parallel edges, it will not have any loop. Okay, is called bipartite. Bipartite का मतलब क्या है, पहली बात हम ही देखते हैं. Bi का मतलब होता है दो, और ये होता है पार्टीशन से रिलेटेड. हम दो पार्टीशन करने वाले हैं ग्राफ के. अब okay, we are going to divide the graph into two parts. A simple graph is called bipartite if its vertex set V, only V, can be partitioned into two disjoint non-empty sets, V1 and V2. So V will be divided into two sets, that is V1 and V2. Okay, such that ki V1 union V2 will be U. It means ki all vertices should be covered.
कोई भी वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए। तो दो पार्ट ऐसे बनेंगे, किसी भी एक सेट के दो पार्ट बनाने हैं कि दोनों का जो यूनियन आ जाए वो टोटल पार्ट आ जाए, टोटल वी बन जाए, कोई वर्टेक्स छूटेगा नहीं। एंड V1 intersection V2, it means no one should be common in between them. कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। Okay. Simple graph called bipartite, if it is vertex, it can be partitioned into two disjoint disjoint का मतलब ये होगा कि phi है, intersection is phi, non-empty sets V1 and V2 such that, again non-empty भी होनी चाहिए, at least one vertex तो दोनों सेट में होना ही चाहिए, अदरवाइज दो पार्ट नहीं हुए, एक खाली हो गया तो वो एक ही पार्ट रह गया, then V equals to V1 हो जाएगा वो, such that every edge in the graph connects a vertex in V1 with the vertex in V2. Okay. किसी मतलब जो भी एज होगी V1 ग्राफ में, वो V1 के किसी वर्टेक्स को V2 के किसी वर्टेक्स से कनेक्ट कर रही होगी। ओके, कहीं ऐसा नहीं होगा कि V1 के वर्टेक्स को V1 से ही कनेक्ट कर रही होगी, ये नहीं होगा। तो वर्टेक्स कनेक्शन बिटवीन V1 एंड V2 होगा हमेशा with the vertex in the V2, so that please first me clear, let me finish. आप क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा? कुछ नहीं सर, आप पहले फिनिश नहीं, आप बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं, बताएं क्या बोल रहे हैं आप? सर ग्राफ में सर सेट थ्योरी आपने पहले इंक्लूड की थी ना, तो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी V1 एंड V2 आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आल्सो। ये मैंने बोला ही नहीं अभी तक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ये मैं बता रहा हूँ सर, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर आप ही पढ़ाओ बेटा। नहीं सर, कुछ नहीं। No, now I will not speak at all. सर एक्सक्लूसिव का मतलब होता है V1 यूनियन V2 इक्वल्स टू V, यानी डोमेन। और V1 और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है V1 इंटरसेक्शन V2 इक्वल्स टू 5। ओके, और आगे बताइए बेटा। सर यही बता रहा था मैं, आपने सेट थ्योरी पहले इंक्लूड की थी ना, कि इसको ग्राफ को सेट थ्योरी से कैसे जोड़ना है, वो जोड़ रहा था सर। हाँ, आगे बताओ बेटा, पढ़ाओ पूरा, इसको पूरा करो अब इसको। सर मैं कैसे पूरा कर दूं सर? मैं इसको छोड़ रहा हूँ टॉपिक को, ये टॉपिक अगली बार यही पढ़ाएगा बेटा। Now I am coming on to the isomorphism. Okay. Now two simple graph, like the simple graph G1 V1 and G2 V1 E2 are isomorphic. Isomorphic means, can anybody tell me what is the meaning of isomorphism हिंदी में? Isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। तो वी हैव लर्न समथिंग लाइक सेम थिंग इनटू द ट्री आल्सो। ट्री एंड ग्राफ में, ट्री में हमने पढ़ा था सिमिलर ग्राफ एंड इक्विवेलेंट ग्राफ। सो अ सिंपल ग्राफ G1 V1 E1 and G2 V2 E2 are isomorphic if there is a bisection. Bisection exists. Bisection is a function actually. If आप लोगों ने पढ़े होंगे functions तो आपको पता होगा what is a bisection. It's a kind of function which is 1 and onto function from V1 and V2 with the property that A and B are adjacent to G1 if and only if FA and FB are adjacent in G2 for all A and B in V1, and such particular function is also known as isomorphism function. Okay, example देखो पहले इसका। आइसोमॉर्फिज्म कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो ये होगा। डेफिनेशन तो आई हैव टोल्ड यू, बट आई नो दैट इट विल नॉट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन वन गो। ओके, सो लेट मी कम ऑन टू द पर्टिकुलर पॉइंट्स दैट वी नीड टू टेक, like we can check for finding the isomorphism. Okay, so for this purpose we can check the invariants, that is properties that two isomorphic simple graph must have. So in order to find out whether the two graphs are isomorphic or not, we can just check that particular properties. It should have the same number of vertices first of all, okay, then same number of edges also, and the same degree of every vertex. Corresponding vertex you can say actually.
कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि जो दो ग्राफ्स के आपस में हम रिस्पेक्टिव वर्टिसेस चूज करेंगे. Okay, so in that case, corresponding vertex should have the same degree also. So if these three properties are being followed, then we can say that particular graph will be that two graphs are called isomorphic graph. Okay, so now look at that particular example. So are they following the are they are isomorphic graph? First of all, so first of all, let us see how many number of vertices are there in both of the graphs. Total number of vertices are in the first one and 5. दोनों में 5 वर्टिसेस हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आप देखना सेम रखे हुए मैंने. ओके, A B C D E. So now they can be arranged to look identical. अब इसको हम क्या कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको आप डिजाइन करो इस दूसरे ग्राफ को. दूसरे ग्राफ को ये देखो. अब मैंने जो पहले वाला ग्राफ, ये वाला जो सेकंड ग्राफ है ना बच्चे, फर्स्ट ग्राफ इज इट इज एंड सेकंड ग्राफ इट इज. So first graph, second graph को I am going to first and second graph को I am going to convert into the similar graph actually. कैसे convert करेंगे वो हमें देखना होगा. ये थोड़ी सी ट्रिक होगी. तो नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है, नंबर ऑफ एजेस भी सेम है क्या? Yes, sir. Yes, है ना. Now I need to convert the graph, both graphs, so that it will look like similar also. कैसे? देखो इसमें लिखा है मैंने. You can see that if in the right graph, if we move the vertex B to the left of the edge AC, then isomorphism F from the left to the right graph is like is correspondingly हम देखें तो F of A, इसको छोड़ो अभी, आपको ये क्लियर नहीं होगा एक्चुअली. इस ग्राफ पे आइए देखिए. यदि हम उसको वहां लेके जाते हैं, इस correspondingly B को हम कहां लेके गए हैं? लेफ्ट टू A और C. उससे हमारे पास ये ग्राफ बना. ओके, सो एजेस यहां कंसीडर करिए. किस किस कौन कौन सी एजेस हैं यहां पर? A एंड B के बीच में A की डिग्री कितनी है? 2. लेट मी क्लियर वन मोर थिंग. यहां पहले डिग्री निकाल लेते हैं. A की डिग्री यहां पर 2 है, यहां पर E की डिग्री 2 है, B की डिग्री 3 है, C की डिग्री 2 है और D की डिग्री 3 है. 3. नाउ A की डिग्री यहां 3 है, A की डिग्री 3, it is 2, it is 3 and it is 2. Okay, now tell me number of the vertices having degree 2, दोनों में सेम है क्या? Yes, sir. Number of vertices having degree 3, दोनों में सेम है क्या? No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, दोनों में सेम है. ओके, तो 2 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 3 है और 3 वर्टिसेस जिनकी डिग्री 2 है. अब मैं क्या करने वाला हूं? Yes, sir. Correspondingly, like let us understand that क्या लिखा था वहां पर? वो F of A is equals to E लिखा था. क्या मतलब था इसका? कि A को मैं चेंज कर रहा हूं E में. A का नॉमेनक्लेचर हम चेंज कर रहे हैं E में, है ना. सो यदि मैं E को हम A कर दें तो ओके, और किसको चेंज करना पड़ेगा मुझे? जिसकी डिग्री हमारी सही हो जाए. D की डिग्री 3 है ना. तो D को हम किस में चेंज कर सकते हैं? यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 3 है. सोचो जरा. B में हमें बस इस ग्राफ में नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज करना है ताकि हमारा ग्राफ आइसोमॉर्फिक बन जाए, सेम बन जाए. मतलब अब ना वर्टिसेस के नाम भी सेम हो जाएंगे उस केस में. अभी आइसोमॉर्फिक है, बस मुझे दिखाना है कि आइसोमॉर्फिक कैसे है. यहाँ चलो ठीक है, यहाँ B की डिग्री कितनी है? 3, लेकिन यहाँ B की डिग्री कितनी है? 2. ओके, सो B की डिग्री 3 करनी है मुझे इस केस में. मान लो कोई ऐसा वर्टेक्स मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो A को मैं B से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर. देखो A किस किस से कनेक्टेड है? अभी C से, B से एंड E से. तो यहाँ पर भी देखिए आप, यदि अभी हम देखें तो एक ऐसा वर्टेक्स जो कि C से, A से और E से कनेक्टेड होगा. तो अब ये वाला B वाला वर्टेक्स आ रहा है मेरे पास कुछ. अब D को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? सोचिए. C से, C और A. Anyone else? बताओ फटाफट. D को C के साथ. C से या E से? C से.
ओके, हम सी से करके देखते हैं एक बार। मान लीजिए साइड में लिख लेता हूँ सी से। तो अब क्या ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक दिख रहा है आपको? हम इसको वापस से रीड्रॉ करें तो ये रीड्रॉ यहाँ पर होके आया है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, डी की एक ही एज, डी की एज एक ही आ रही है। यहाँ पर एक एज मिस हो गई है डी की, कोई डी एंड ई के बीच में कोई एज मिस हो गई है। यहाँ वो एज लगाना भूल गया मैं। यहाँ हम देखते हैं नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए को ई से रिप्लेस किया है ना, और बी को हमने ए से रिप्लेस किया, सी को हमने बी से किया, डी को सी से किया और ई को डी से किया। ये हमने इस ग्राफ में लिया हुआ है एक्चुअली, फर्स्ट ग्राफ में। इसका मैं यहाँ पर रिवर्स बता रहा था आपको। तो ए को यदि हम यहाँ पर ई से रिप्लेस कर दें, या उल्टा भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम ए को ई से कर दिया है, ए को यहाँ हमने बी से कर दिया, इज इट ओके, एंड बी को हमने सी से किया है, यहाँ पर डी को सी से किया है, बी को हमने किया है ए से, और हमने फाइनली सी को किया है डी से। अब यदि मैं रीड्रॉ करता हूं इस ग्राफ को, तो इट विल बी सिमिलर टू दैट ग्राफ एक्चुअली, और हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज फॉलो भी हो जाएंगी उस केस में। इसको हटा के हम रीड्रॉ करते हैं वापस। देखो ए ई बी सी एंड डी। And now look at that, key B is this one and having the connection with 3, and that are D, A and this is D, this is A, and this is E. So it will be a connection with this D and A and C, or E. Now in case of this A will have the connection of C से कनेक्शन है, यहाँ पर नहीं है, A से E पर कनेक्शन है, यस यहाँ आ गया, A से B पर आ गया है और A से C पर है। ओके, तो C को चेंज करना होगा यहाँ पर हमें, इट विल बी D, इस वाली एच का C to D इज देयर, B की जगह E रख दें तो, और लेट अस लुक वंस अगेन कि इसमें क्या चेंज किया हमने। f ऑफ a को e से रिप्लेस किया, इट मींस e की जगह a हो गया, इट इज ओके, एंड a की जगह वी हैव डन b, फॉर c इट विल बी d, फॉर b इट विल बी c एक्चुअली, यहाँ इशू आ रहा है, it is C, and for D it will be E. D will be E actually. So now look at that. जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें B जो है वो कितने वर्टिसेस से कनेक्टेड है? ओरिजिनल ग्राफ में यदि हम इसमें देख रहे हैं तो B की जो डिग्री है वो, B की जो ओवरऑल डिग्री है वो 2 है, एंड हमने इसको C से कन्वर्ट कर दिया है। सो B यहाँ पर आया मेरे पास, अब ये देखिए ये B होगा मेरे पास, ओके, क्योंकि हमने B को C से रिप्लेस किया है, तो B विल बी दिस, ओके। नाउ C विल बी रिप्लेस बाय D, D को हम यहाँ पर, सॉरी, D को हम रिप्लेस करेंगे E से, E को रिप्लेस करेंगे हम A से, और A को रिप्लेस करेंगे हम B से, और B को रिप्लेस करेंगे हम C से। ग्राफ यही होगा हमारा। इस ग्राफ को हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स। सर 2 बार भी ले लिया आपने? नहीं, 2 बार भी नहीं दिया, वो हटाना है भी, ये मैं वापस बना देता हूँ इसको एक बार। इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ग्राफ को चेंज हम वैसे करेंगे। सपोज ये एक वर्टेक्स है,
नहीं, नॉर्मली से बाद में करते हैं अपन अभी। ये एक वर्टेक्स है, okay, we are replacing this by B, we are replacing this by C, and this by A, and this D by E, and C by D. D से इसको रिप्लेस किया है ना, नहीं ग्राफ इज सेम है एक्चुअली। now look at that and compare this and this graph. D की डिग्री 3, C की डिग्री 2, D की डिग्री 3, A की यहाँ डिग्री पर 2, हम फाइंड करते हैं E की डिग्री 2। बेटा आप मन में Same है बोल सर। सकते हो, आप मन में भी बोल सकते हो बेटा। ओके, B की डिग्री इट इज 3, फॉर A इट इज 2, फॉर E इट इज 2, फॉर C it is 2, and for D it is 3. So now is it very much similar to this graph or not? Tell me. In every view actually you just see that if C has degree 2 and now the two edges are only CB and CD here, और यहाँ पर भी वही है CB and CD. Okay, now look at A, it has 3 degrees and it has a connection between B, C and E. So same, यहाँ पर भी B, A, नहीं, just look at D, it is D na, so D will be connected to C. Yes, it will be connected, it is connected to C here only also, C, B and E, C, B and E. Now if I am talking about A only, it has degree 2 and it has a connection with B and E, so it is B and E. Yes or no? Now you just understand the isomorphism means. Same number of the vertices are there in this graph, both the graphs given to us. Same number of the edges are there, and we have some kind of bijection, like a function kind of one-to-one and on-to mapping, which can convert this graph into a similar kind of graph of the given graph. Then that two graphs, this one and this one, are known as isomorphic graph. I think अब थोड़ा clear हुआ होगा. Yes or no? सर फर्स्ट और सेकंड आइसोमॉर्फिक है या फर्स्ट एंड थर्ड आइसोमॉर्फिक है या फिर फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और क्वेश्चन थर्ड क्या है है बेटा? आर द फॉलोइंग टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक? इन दो ग्राफ्स को जो दिए हुए हैं उनमें हमें आइसोमॉर्फिज्म आइडेंटिफाई करना है। तो कौन से ग्राफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ की बात कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड ग्राफ। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। एक बार वापस ध्यान से सुनिएगा। What you need to do, you have been given likewise कि are they the given two graphs are isomorphic or not. So first of all you need to find out whether it has same number of vertices or same number of edges. ये दो चीजें तो आप first go में identify करेंगे। If it is so, then you will move ahead for the third point, otherwise you will not move for the third point. So in this we have 5 vertices and 6 edges, so it is okay. Now what we are going to do is we are trying to find out the correlationship between the vertices in both the graphs. Likewise I have just identified, I can find, like अब मुझे ये पता लग गया कि B की डिग्री, यहाँ पर दो vertices हैं जो 3 डिग्री के हैं। Similarly we will have these in this graph 2 vertices of 3 degree. Okay, now I will try to match the vertices like B and D. यहाँ पर कौन से हैं? A and C. So मैंने इनको इनमें से identify किया कि which one could be B and which one could be D. Similarly for other 3 vertices of degree 2, I will try to identify which one is there to represent the A, E and C. So हमने उसके अकॉर्डिंग ये मैपिंग आइडेंटिफाई करी। तो A को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? E से। B को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ A से, C B से, D C से एंड E D से। So suppose मैं ये चीज करने में मतलब like I will do it then and only then I can say that two graphs are isomorphic graph. So ये जो ग्राफ मैंने just generate किया है, okay, this is a graph that is intermediate and it will help me to conclude that is the isomorphism is there or not. Is it okay now? So isomorphic graph is also compulsory, that is cyclic graph or uncyclic or bounded? What is a bounded graph? Sir, closed graph. ओके ओके, न्यू टर्म हम सीख रहे हैं यहाँ पर, बाउंडेड ग्राफ। ओके बच्चे, सो बाउंडेड मतलब क्लोज ग्राफ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
सो नहीं, इट इज नॉट नेसेसरली कि ये क्लोज होना चाहिए या बाउंडेड होना चाहिए या साइक्लिक होना चाहिए या आइसाइक्लिक होना चाहिए. सो ये क्लियर है सबको क्या? एनी डाउट इन दैट? आई एम आस्किंग टू एवरीवन एल्स. Now you can come on to that. Yes, if someone want to ask anything. यस सर, मैं पूछ रहा था सर, इसमें एक स्लाइड आगे करना सर. हाँ, इनवेरिएंस, these are properties, 3 properties called invariants. Yeah, or Yes. okay sir. So now is it okay or not? Now you can understand the definition also. Suppose for two graphs, if we have a bijection from the vertex at V1 to the vertex at V2 with the property that A and B are adjacent to G1 if and only if they are adjacent in the G2 also, then we will say, is it okay? Say yes me at least, yes or no. Got it sir. Other than Brij Kishore, everyone, I want to ask everyone, is it okay? Sir, we will go with it once more. Okay, We no will issue. read it once more. Very good. Now you just go through this example also. This is the example where we are not able to show that these are isomorphic. ये isomorphic नहीं है actually. Instead of having the same number of vertices and same number of edges, यहाँ पर 5 vertices हैं, 5 edges, 6 edges हैं, same. Okay, but still we are not able to find out like that this will be isomorphic graph. ये isomorphic नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा? You need to identify that thing. Is it okay? So this PPT is when I will share, then just try to find out whether this is isomorphic or not isomorphic. सर चेंजेस बने रहना सर. Okay. So now ये बाइपाइट्राइड ग्राफ आपको ये कल पढ़ाएंगे. क्या सर? आप कल बाइपाइट्राइड ग्राफ पढ़ाओगे बेटा? सर मुझे नहीं आता सर, आप नहीं, you have to taught now. नहीं सर, मेरे को नहीं आता सर. We will learn only from you. And now from next class we will start the representation of the graph. Okay, how we will represent the graph. That is all for it. It takes 3 lectures to understand the very simple terms of the graphs. Okay, and we will in next lecture we will start with the representation of the graph. How we can represent the graph data structure into memory. Today is very less attendance. Only 34 students are there. Sir, I got disconnected in between. So the PPT I have already shared with you all, and I will upload this particular lecture today also and share the PPT with you also again. So try to learn the concepts, and then we will in the next lecture we will move ahead for representing the graph, and then we will start the various operations on the graph. Okay, along with some of the applications of the graphs also. So parallelly we will learn the operations as well as various applications of the graphs. Graph is one of the very interesting unit of the DSA actually. ये last है लेकिन बहुत interesting है. Okay, thank you very much for today.